हेलो गाइस, दिस इज योर केपी सार कृष्ण प्रकाश। कैसे बच्चे लोग, कैसा चल रहे? सो यू आर फीलिंग दैट अरे बाबा गेट एग्जाम टफ हो गया। हम सिर्फ गेट प्रिपरेशन अलोंग विथ कॉलेज वी हैव डन। हम अभी फाइनल ईयर में था, हमको गेट एग्जाम टफ लग रहा है। क्या करेगा रे बाबा, ऐसा सोच रहे क्या? So for those who are feeling GATE became tough for them, and also those who are exclusively present, final year students, और दूसरा मौका मिल रहा है, सेकंड चांस, सेकंड अपॉर्चुनिटी। कौन दे रहे बाबा, कौन दे रहे? L&T, मालूम था L&T? लार्सन टर्बो, इंडियाज नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी। हर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक ड्रीम था, एटलीस्ट वन टाइम टू वर्क फॉर L&T, that is India's top construction company. This L&T is offering you BIS exam. What is BIS? Build India Scholarship. L&T BIS is exclusively for final year present fourth year students who are going to pass out in 2023. For them only it is eligible. Already I made a video regarding L&T BAS who are eligible. What are the benefits? Just I will brief it. The final year students who can write L&T Build India Scholarship Test, they are going to get a chance to do MTech. कहाँ रे बाबा MTech? MTech in Construction Management. कहाँ रे? IIT मद्रास, NIT सूरतकल, NIT ट्रिची। समझ आ रहा है आपको? इतना बिग इंस्टीट्यूट्स में IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास, NIT सूरतकल एंड NIT ट्रिची have tie up with L&T. So L&T BAS exam open the door for your dream IITs along with after completion of job in L&T. So L&T will sponsor everything for your post graduation in IIT or NIT and after that you are going to become employee of L&T after a successful completion of the MTech. This opportunity कभी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप फाइनल ईयर स्टूडेंट होगा आपको मिल जाएगा। Now students question is, sir, when to apply? Already application is open. I told you I have made a video on it. Already L&T BAS application is open. Go through L&T website and apply now itself. And शुरू करो प्रिपरेशन के लिए। हम आज ये वीडियो क्या करने के लिए बना दिया? एग्जाम पैटर्न बात करने के लिए। What are the benefits? How to apply? Everything already one video is over. अभी क्या बात कर रहे हैं हम? L&T BAS एग्जाम पैटर्न कैसा चलेगा? सो नाउ एग्जाम पैटर्न का बारे में बात कर रहे हैं हम। बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न, अभी अनअकैडमी में हमको 20% ऑफ चल रहा है एंड नया बैचेस फॉर 2024 एंड 2025 गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्टेड and next week also new batch is going to start. So आपका दोस्तों को बताओ, जूनियर्स को बताओ, हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल यूज करो। कम इनटू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक योर ड्रीम्स। समझ आ रहा है आपको? केपी सर आपके साथ है। केपी सिविल कोड यूज करने के बाद आपका ड्रीम्स क्रैक करने के लिए क्या चाहिए वो दे रहे केपी सर, एंड केपी सर विथ यू टिल यू रीच योर गोल। नाउ हम एग्जाम पैटर्न का बारे में बात कर रहे हैं। L&T BAS एग्जामिनेशन इज फॉर 210 मिनट्स। 210 मिनट्स क्या रे बाबा? 3.5 hours एग्जामिनेशन। हमको जनरली 3 hours एग्जामिनेशन मालूम था। 2 hour 10 minutes, sorry 210 minutes, 3.5 hour एग्जामिनेशन। 3 hour 180 minutes, half an hour 30 minutes, total 210 minutes. इनमें पार्ट 1 क्या चल रहा है? पार्ट 1 में
एप्टीट्यूड यू हैव टू राइट 90 मिनट्स। समझ कर लो, एप्टीट्यूड 90 मिनट्स में एप्टीट्यूड ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सिविल 120 मिनट्स। सो टेक्निकल पेपर सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल पेपर सिविल इंजीनियरिंग फॉर 120 मिनट्स, 2 hours time. Aptitude 1.5 hour time. Technical paper civil engineering 2 hours 120 minutes. Aptitude 90 minutes, 1.5 hour. Very important points you need to remember. Not allowed to switch between. आप गेट जैसा, गेट में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 65 क्वेश्चन इन 3 hours आपको क्या चाहिए वो देना पड़ेगा। इधर ऐसा नहीं था। पेपर 1 पेपर 2 का बीच में स्विच ओवर नहीं होना चाहिए। पहले फर्स्ट क्या करेगा रे बाबा, फर्स्ट नीड टू राइट एप्टीट्यूड। फर्स्ट 90 मिनट्स में आप सिर्फ एप्टीट्यूड देना पड़ेगा, सिर्फ एप्टीट्यूड फर्स्ट 90 मिनट्स में देना पड़ेगा। ये खत्म होने के बाद भी सिविल, आफ्टर 90 मिनट्स ओनली आपको सिविल क्वेश्चंस आएगा। दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन गाइस। LNT BIS इज एन ऑनलाइन एग्जाम। अभी तक कोई पेपर बाहर नहीं आ गया, कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं आ गया। नो पेपर पैटर्न, नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन came out. It's an online examination. They won't release questions anywhere. And I am making this video based on the previous students. For my sake, they gave me the questions, they gave me the pattern, they told me how the exam went, what are the models of questions came, what subject से ज्यादा क्वेश्चंस आ गया। ये प्रीवियस स्टूडेंट्स मेरा के लिए दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, सो आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विथ यू। समझ आ रहा है? कभी भी नहीं मिलेगा इनका इंफॉर्मेशन आपको, आप एग्जाम खुद से लिखना पड़ेगा। नो प्रीवियस पेपर्स केम आउट, यू सर्च थ्रू आउट द इंटरनेट, नो प्रीवियस पेपर्स केम आउट, you search throughout the YouTube, nobody will say you about pattern, just they will say you this many questions will come, but no one will say what are the topics. I am going to reveal what topics to focus, what topics not to focus. समझ आ रहा है आपको? So from the information got from your seniors, I am making the video which topics to focus more, which topics not to focus more, how the pattern of examination will be. And ये ऑनलाइन एग्जाम था, सिर्फ फर्स्ट 90 मिनट्स आपका टाइम पूरा एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली सिविल क्वेश्चंस विल कम। आफ्टर 90 मिनट्स कंप्लीटेड देन ओनली सिविल क्वेश्चंस विल कम। यू कांट गो टू सिविल क्वेश्चंस अप टू 90th मिनट। सो नो स्विच ओवर बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले पेपर 1 90 मिनट्स खत्म होने के बाद पेपर 2 आएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर इज एनेबल्ड in the system. Virtual calculator, same like gate examination, same like gate model, virtual calculator is enabled. You can go through virtual calculator and solve the questions. Then कैसा चल रही प्रिपरेशन? सो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पैटर्न का बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। एप्टीट्यूड से इंग्लिश क्या है? वर्बल एबिलिटी बोल रहे हम। वर्बल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। सो एप्टीट्यूड बोल रहे हम, पूरा एप्टीट्यूड नहीं था। वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट न्यूमेरिकल एबिलिटी 20। सो इंग्लिश 25, लॉजिकल रीजनिंग 50, एप्टीट्यूड 25, टोटल 100 questions. How much time? How much time do you have? 90 minutes में 100 questions. अरे देखो बाबा, even less than 1 minute to solve the question. Time management will made crucial. Time management is very, very crucial for you.
समझ आ रहा है आपको? 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करना चाहिए। बट इतना डरो मत, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, लाइक गेट 1 मार्क क्वेश्चन। गेट एग्जाम में 1 मार्क जैसा फटाफट हो जाएगा ना, इनका भी इजी हो जाएगा, इवन इजियर देन दोज क्वेश्चंस। ब्रेन से नो विदाउट कैल्सी आल्सो, ब्रेन से जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यू डोंट वरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ओनली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विल टेक मोर टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हो रहा है? कॉम्प्रहेंशन, पैसेज रीडिंग। नाउ विल टॉक व्हाट आर वर्बल एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चल रहा है? वर्बल एबिलिटी में क्या क्या चल रहा है? ग्रामर एंड इट्स बेसिक्स। ग्रामर आपको चाहिए, प्रपोजिशंस, ऑल दीज रिक्वायर्ड ग्रामर। व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर? एवरीथिंग यू नीड टू लर्न, ग्रामर एंड बेसिक्स। vocabulary model questions, vocabulary, English pronunciation, vocabulary model question. Reading comprehension, I told you, basic fundamental, more time is taken by this reading comprehension only. It will take a lot of time and kill your time. So now itself you can practice how to solve comprehensive questions so that you can save final time in the examination. Please understand that. Then coming to numerical ability. Numerical ability में arithmetic reasoning, quantitative aptitude 1. Arithmetic reasoning, quantitative aptitude 1 में क्या क्या आ रहा है? Number system, simplification, LCF, HCF and logarithms. So basic quantitative, basic arithmetic reasoning, what we study at 10th standard. ये सिर्फ बेसिक से आएगा। हमारा 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज है वो भी आ रहा है। नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, वेरी क्लियरली रिटन, सिंप्लीफिकेशन एंड लॉगरिथम्स। सो सिर्फ गेट में 1 मार्क का और आसान वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस, वेरी क्लियरली रिटन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, चेन रूल, pipes and cisterns, time and work. So you know all these now. You studied already in GATE paper. Speed, time, distance. Speed, time, distance मालूम था आपको? Boats and streams, trains and problem. So mixers and alligation, discount method, simple interest, compound interest methods. All the words are known to you. Not new, nothing new. Everything you studied for GATE examination. ये गेट एप्टीट्यूड का सिंपल मिलेगा आपको। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 में क्या आ रहा है? 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इजी वाला मिल जाएगा आपको। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स एंड ऑल द थिंग्स। Reasoning, you know, reasoning, logical reasoning as well as arithmetical reasoning. Logical reasoning will play a very big role. Reasoning से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, 50 questions from reasoning, blood relation, seating arrangement, coding, decoding, directions, alphabet test, time sequence test, logical problems, logical sequence of words, spatial aptitude, everything will play very very big role. So these are complete package of GATE syllabus. Very clearly I am saying, complete package of GATE syllabus. So solving aptitude, verbal ability, reasoning. English verbal ability 25, logical reasoning 50, numerical ability 25. Total 100 questions. आप सिर्फ GATE PYQ सॉल्व करो, आपसे easily 100 को 100 मार्क्स मिल जाएगा। इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं था। वेरी क्लियर। नाउ कमिंग फॉर टेक्निकल पेपर, एज आई टोल्ड, आफ्टर 90 मिनट्स कंप्लीटेड, एप्टीट्यूड ऑफ 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस हो गया।
Then you are moving on 91 minute, you are moving on to civil paper. You may finish aptitude in half an hour, 30 minutes. You can't give civil paper. You may finish aptitude in 60 minutes, you can't give civil paper. After 90 minutes, you are moving to civil technical paper, 120 minutes, which is a 2 hours duration. You need to solve 100 question. 100 question, I repeat, 100 questions in 120 minutes. सिर्फ आपको 1.2 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन को 1.2 मिनट्स टाइम मिल रहा है आपको. सिलेबस क्या है? सिलेबस इज गेट सिलेबस ओनली. नो डाउट एट ऑल. Syllabus is particularly, specifically GATE syllabus only. And solving GATE PYQs, especially solving GATE PYQ, especially 1 mark questions will help you a lot. 1 mark GATE questions, ESC questions, because the questions are straight away not at all lengthy. डरो मत. ऐसा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आ गया लेंथी वाला इन गेट 2023. ऐसा मॉडल नहीं आएगा. डरो मत आप. इतना आसान क्वेश्चन आएगा, स्ट्राइट अवे खुद से ब्रेन से सॉल्व करके आंसर दे रहे. इतना आसान क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. इट्स ए वेरी सिंपल एंड स्पेसिफाइड क्वेश्चन. गेट 1 मार्क क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करो, ईएससी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे हो जाएगा. यू कैन फोकस ऑन ESC numerical, ESC PYQ. So ESC PYQ, GATE 1 mark, GATE 1 mark questions and ESC PYQs अच्छे से फोकस करो, आपसे टेक्निकल पेपर हो जाएगा. And what subjects to focus in technical? This is the next question students are going to ask. Subjects to focus in technical paper. So before going to discuss about subjects to focus in technical paper, one point you remember, they apply logic reasoning model in our technical syllabus. They won't ask too much conceptual question. They will ask a simple straight away question, but they will focus more on logical thinking and reasoning. And as they are offering MTech in construction management or construction technology, so the first focused subject, subjects to focus, first focused subject, CPM and PERT. Students are saying at least out of 100, 6 to 7 questions are coming. 6 to 7 questions are coming from CPM PERT. Minimum, that is the lowest number. CPM PERT says 6 to 7 lowest number. That to rules of network construction. Identify critical type. Very clearly I am saying. What and what coming? Rules of network construction. Rules of network construction, critical time estimation, critical time estimation, float analysis, float analysis, and then project duration, probable project duration. So whatever the simple questions we are having, such kind, and you need to study theory, difference between CPM and PERT, and also you need to study basics of cost estimation. Basics of cost estimation. These are required. These are required from CPM PERT. So these are the important topics we are expecting from CPM PERT. कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिलेगा. In 2020, L&T BAS they have given 10 questions from CPM PERT. 21, 8, 22, 7. So on an average minimum कम से कम 6 to 7 questions will come from CPM PERT. Then
Coming to next important question. Next important question is generally gate pattern जैसा नहीं था. Hydrology we can expect now. Again 6 to 7 questions from hydrology. Hydrology they are asking more questions, 6 to 7 questions from hydrology. So as usual you can focus on hydrograph, then risk, you know na hydrologic risk, then you focus on infiltration, so same models, then average precipitation finding, missing data. कम से कम हाइड्रोग्राफ से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, कम से कम हाइड्रोग्राफ से 2-3 क्वेश्चन मिलेगा आपको. हाइड्रोग्राफ, रिस्क, इन्फिल्ट्रेशन, मिसिंग डेटा, पी एवरेज and well hydraulics. So these are the topics to be focused in hydrology. 6 to 7 questions from hydrology again. 2020 में 6 questions आ गया, 21 में 8 questions, 22 में सिर्फ 8 question. So regularly they are giving more questions from hydrology. Then moving over next subject to be focused. I'm writing next subject's order. Building material. Very important, building material will play a big role in solving questions from civil paper in LNTBAS. Generally we neglect building materials for gate examination. आप एक काम करो, I have done a course of building material in plus class. 10 hours में most important topics of building materials I have completed. That course is enough to solve the questions of LNTBAS. 10 घंटा में all bricks, stones, wood, cement, concrete पूरा 10 घंटा में पढ़ लिया हम. फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्स. एक कोर्स से नोट्स ले लो, एक कोर्स से अच्छे से पढ़ लो. ऑल क्वेश्चंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इन LNTBAS यू आर एबल टू सॉल्व. समझ आ रहा है? बिल्डिंग मटेरियल्स you need to focus. Then CT you know na, concrete technology, mixed design concept. Concrete technology से क्या है? Mixed design concept. Mixed design that will play big role. At least 3-4 questions you can expect. Building material again 7 to 8 questions from building material. Concrete technology 3 to 4. So combinedly building material, mixed design, if you include combinedly, you are having at least 10 questions. Followed by soil mechanics, it will be playing very big role. And more questions from foundation. Foundation engineering से आपको ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. Especially they are asking types of foundation. कौन सा सॉइल के लिए कौन सा फाउंडेशन चाहिए, पाइल ग्रुप एफिशिएंसी कैलकुलेशन चाहिए, और सिंपल स्ट्राइट अवे थियरिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको. मैच द फॉलोइंग फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स. वी आर हैविंग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चंस वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स. एंड बेसिक प्रॉपर्टीज से सेहवाग फार्मूला इज देयर ना, वाइड रेशियो फाइंडिंग यूजिंग सेहवाग फार्मूला. And also V1 by V2 is equal to 1 plus E1 by 1 plus E2. ये फार्मूला से आएगा. V1 gamma 1 is equal to V2 gamma 2. From that you can get the questions. So the basic straight away simple questions from soil mechanics, and very important more questions when compared to soil, more questions in foundation engineering. So focus more on foundation engineering when compared to soil. And also you focus on shear strength and consolidation. These two topics are very important. Compulsory one question from shear strength, one question from consolidation compulsory you are having from
जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. So these are the foundation अच्छे से पढ़ लो, basic formulas पढ़ लो, basic relationship formulas are there na? Basic relation from soil. From soil I am saying basic relation, then consolidation, पूरा फाउंडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन, shear strength. And generally foundation में we are going to neglect soil exploration. This is the must and should study soil exploration and SPT, standard penetration test. These are very important. Standard penetration test में number of blows हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, वहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा. थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इनका बारे में. सो फाउंडेशन इंजीनियरिंग पूरा टॉपिक, मोर फोकस ऑन सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. सॉइल मैकेनिक्स से बेसिक रिलेशन, कंसोलिडेशन एंड shear strength. Then moving on to next order, focus on the basic subjects. Combinedly you can get 10 questions from FM and SM. Fluid mechanics and strength of material, all combinedly, both combinedly, you are getting 10 questions. But all are simple, easy, straight away question. Basic properties, stress strain relationship, shear force bending moment, simple stresses and strain. From that topics, columns and beams, you can get more questions from strength of material. So basic units are there. What is dimensional formula for kinematic viscosity? Find out surface tension for the given case. From fluid mechanics I am talking. Find out surface tension for the given case. Dimensional formulas and unit conversion. Focus on the topic of dimensional analysis. One question pakka from flow through pipes. Pakka one question from flow through pipe. So these are the basic subjects where you can give good focus. Then after that, environmental engineering, one question from quality, very clearly I am writing, one question from quality, one question from water treatment, one question from air pollution, one question from solid waste management, one question from wastewater treatment, sewage treatment. So mostly 5 questions only, not more than it. Not more than it. From environmental you are having one question from qualities, one question from water treatment, one question from air pollution, one from solid waste management, another one from wastewater treatment. And also you go through basics of noise pollution, some questions are also coming from noise. Then highway engineering. Highway and traffic. These are playing a big role because most of the L&T projects are related. L&T is involved in metro rail constructions in India and also very big projects in India. So you can study highway and traffic engineering. Materials, highway materials are not required, but remaining concepts are very important. हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आपको 5 मार्क्स मिलेगा. एयरपोर्ट हार्बर टनल 1 क्वेश्चन, एयरपोर्ट हार्बर टनल से 1 क्वेश्चन, बट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग. सो रिमाइनिंग एज यूजुअल एसए, आरसीसी, स्टील, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था. ये ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मिलके आपको सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चन. सो आई रिपीट वन मोर टाइम. First, you focus on construction management. Second, you focus on hydrology. Next, you go and focus on building material. After that, geotechnical engineering, soil mechanics, including foundation. Foundation can give more weightage for you. After that, this is the order: FM and SM, environmental, transportation, and then give structural analysis, RCC and steel. But remember, don't go through lengthy questions of GATE 2 marks model. Straight away simple question which will be completed in 1.5 or 2 minutes, not more than that. Questions are as easy as
सिंपल. इतना डरो मत. गेट से आपको टफ कोई एग्जाम नहीं दिएगा. L&T BAS is a simple and easy exam. And after the exam is completed, written test completed, written test, most of the students can do it. Those who prepared for GATE, surely they can crack the written test. But the toughness is in the interview. A panel of 5 to 6 members will sit and they will ask questions from your interested pattern, interested subject. And the questions are not from the subject. Questions are from your practical knowledge. They will test your practical experience and practical knowledge. Especially they will test your critical thinking mentality in the interview. So once the written test is over, I am going to release one more video regarding L&T BAS interview. You don't worry. Your KP sir is with you. पहले ये पैटर्न से L&T BAS रिटर्न टेस्ट को प्रिपेयर करो. रिटर्न टेस्ट अच्छे से दो. देन वंस L&T BAS रिटर्न टेस्ट इज कंप्लीटेड, वन मोर वीडियो आई कैन मेक हाउ टू फेस L&T BAS इंटरव्यू. सो आई एम विथ यू ऑलवेज गाइस, यू डोंट वरी. सो मूविंग ऑन वी कैन से so life always offers you a second chance. Now the second chance offered to the final year students, what it's called? It's called L&T BAS examination. What it's called? Please tell me. Life always offers a second chance, especially to the final year students. Final year students. What is the second chance you got now? What is the second chance you got now? That second chance given to you, L&T BAS. Don't miss the opportunity. Don't miss the second chance. Because this is the second entry pass for your entry into your dream IIT, IIT Madras, IIT Delhi, dream NIT, NIT Surathkal, NIT Trichy. Along with your course, after course completion, job in L&T, and entire your course related sponsorship is provided by L&T. So this is the best ever offer exclusively for the final year students. So don't miss the opportunity, guys. So if you are in the third year, you are preparing for L&T BAS exam, 1 year time is there. Exclusively this 1 year time, if you work hard with our Unacademy GATE and AC coaching, ultimately you are the winner in L&T BAS. Because everywhere, every stage, our faculty, our teachers are with you to make you to crack any exam you are going to write. So guys, now 20% offer is going on in Unacademy. So use our universal code KP Civil. Fulfill your dreams of GATE and DSC. Fulfill your dream of L&T BAS. Always your KP sir is with you. So follow me in our Telegram channel KP SAR Students. Anytime you can contact me through this Telegram channel. I am always with you, help you. Guys, anything more if you want to ask me regarding L&T BAS, you can directly message me in a Telegram. KP Civil is the Telegram name, personal Telegram name. Group is KP SAR Students. I am always with you. So I have made a clear picture regarding how to prepare for L&T BAS. I hope so you are going to crack with bright colors. You are going to deal with L&T BAS exam easily by this video. Okay guys, let's crack it.